advisory jurisdiction. Advisory jurisdictions. Now advisory jurisdictions कौन students? Under article 143, under article 143 एठी प्रेसिडेंट का हाथ रे पावर अछि. President has the power to seek advice from the Supreme Court. Okay, from the Supreme Court. अच्छा को विषय रे सुप्रीम कोर्ट एडवाइस नेबे? ऑब्वियसली हमरो प्रेसिडेंट जदि किछि एडवाइस मागी बेसी तो नॉर्मल जिंसो पे एडवाइस केबे भी मागी बेनी. मागी बे के एक्स वाई जेड किछि भी एरे गेरे जिंसो पे से केबे भी एडवाइस मागीबे नाही. जदि इमती कोनोसी जिंसो अछि जोटा संवैधानिक पॉइंट ऑफ व्यू रो किछि क्लियर नाही. Okay, if there is certain doubt in the some article or interpretation of the law कि law कौन कहूची जदि सेई जगह रे क्लियर नुह ताहले प्रेसिडेंट चाहिए कौन करि परिबे सुप्रीम कोर्ट को ठारू एडवाइस मागी परिबे कहिबे जे आपनकर मतामत दियंतु. तुमे बुझी परछो कि प्रेसिडेंट जदि एडवाइस मागुछंती एमती तो मागंतनी बहुत रेयर ओकेजन थी जो प्रेसिडेंट एडवाइस मागी पारे. अब से ओकेजन रे ताकू कौन आउटमोस्ट इंपोर्टेंट हिसाब रे ताकू धरा जाए. बुझी परछो आउटमोस्ट इंपोर्टेंट हिसाब रे ताकू धरा जाए. मु एग्जांपल भी देबी. रिसेंटली गोटे केस हिच एठी किंतु क्राइटेरिया कौन तुम बुझी रख. सुप्रीम कोर्ट देखो प्रेसिडेंट कहले मते एक्स वाई जेड जिनस रे मोर एथरे डाउट अछि याकू मते क्लैरिफाई करिके दियो. सुप्रीम कोर्ट एठी आसिला एडवाइस रो अर्थ कोन? एडवाइस रो अर्थ बाइंडिंग ना नुह सेटा होची प्रश्न. एडवाइस रो अर्थ इज इट अ बाइंडिंग और नॉट, दैट इज द क्वेश्चन. एडवाइस रो जेमति फॉर एग्जांपल बहुत समय एज अ टीचर मु तुमको एडवाइस देबी कोन करिवो कोन न करिवो, बट जदि तुम सेटा को फॉलो न करिवो ताले मो हाथ रे किछि अछि कि ना मु तुमको रोक रखि परिबी कि? आई कैन नॉट डू दैट. यू आर ए फ्री पर्सन. मोर कर्तव्य मु तुमको केवल गाइड करि परिबी तुमको, बट तमे सेटा को फॉलो करिवो कि न करिवो सेटा तुम हाथ रे अछि. मु तुमको फोर्स करि परिबिनी. एडी मा पॉइंट सेही भली सुप्रीम कोर्ट जदि कोनोसी एडवाइस दियंते प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड टू फॉलो दैट एडवाइस. जदि सुप्रीम कोर्ट किसी एडवाइस दियंती ताले प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड टू फॉलो द पर्टिकुलर एडवाइस. ठीक अछि, ये हला पॉइंट नंबर 1. सेकंड जिंस स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल एक्स वाई जेड किए गोटे मो पाखु आसिला कि सर आपनकर एडवाइस दरकार मते, मोर इच्छा नै एडवाइस दबा पई, ता माने आई एम आल्सो नॉट बाउंड टू गिव एडवाइस. सेटा तो मोर डिस्क्रिप्शन ना, मु तुमको एडवाइस देबी कि न देबी सेटा मो ऊपर अछि. तुमे किमा एक्स वाई जेड पर्सन मो पाखु आसिले कहले कि मते एई विषय रे मते कि आपनकर मतामत दरकार, आपनकर एडवाइस टिके मते दियंतु. मु तुमको पोलाइटली मना कर दे पारे कि नै मु देई परिबी एडवाइस. तो एठी मु कोन कहिली सुप्रीम कोर्ट मैंडेटरी होची टू रिप्लाई. टू रिप्लाई व्हाट? रिप्लाई विथ एडवाइस और विदाउट एडवाइस. आर यू क्लियर? सो सुप्रीम कोर्ट रिप्लाई तो करिवे ऑब्वियसली. जेहेतु प्रेसिडेंट गोटे चिट्ठी करछन तमे तो रिप्लाई दबो नै. रिप्लाई तो सुप्रीम कोर्ट जेमती भी करिवे, बट से रिप्लाईटा एमती भी हवा दरकार जे ठीक अछि वी डोंट वांट टू गिव एडवाइस. हे परिबो जनरली सुप्रीम कोर्ट करंतनी, साधारणतः विथ एडवाइस ही प्रेसिडेंट को दिया जाए. अब सही क्षेत्र रे प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड टू फॉलो दैट एडवाइस. बाइंडिंग नुह तांका ऊपर. से एडवाइस को फॉलो करि पारंती किबा ताको फॉलो न भी करि पारंती. ताको हमें कोन कहबा? एडवाइजरी जुरिस्डिक्शंस. क्लियर? यार गोटे रिसेंटली
এটা তোমার কেবে বাহারছি न्यूज़टा देख তোমার 16 मे যেতিପାଇଁ କହିଲି এটা ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜୁଡ଼ିସିଆରୀ ଚାପ୍ଟର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି ରିସେଣ୍ଟଲି ଆମର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସିଏ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କର ଏବଂ ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କର ବିଷୟକୁ ନେଇକି କିଛିଟା ସିଏ ଆଡଭାଇସ୍ ମାଗିଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଜାଣିବା ତା ବିଷୟରେ କ'ଣ ସିଏ ଆଡଭାଇସ୍ କ'ଣ ମାଗିଛନ୍ତି ଇନ୍ ଦ ଆବସେନ୍ସ ଅଫ୍ ଏନି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ପ୍ରେସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟାଇମଲାଇନ୍ or manner or of exercise power by a governor can time limits be imposed and manner of exercise of powers be prescribed through judicial orders कहबार अर्थ या तुमको ओडिया रे ये ट्रांसलेट कर दउची रिसेंटली बहुत सारा कंट्रोवर्सी चलथिला स्पेशली सदर्न रो किछिटा स्टेट अछंती से माने सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट मानकरे से माने कोन करथले अपील फाइल करथले कोन गोटे राज्य रे विधानसभा जो गोटे बिल पास करे से बिल कोठी जीवो गवर्नर पाखु जीवो गवर्नर को पाखरे पावर को अछि इधर अप्रूव करिवे रिजेक्ट करिवे एटसेट्रा बट संविधान रे कोठी लिखा हैनी से केते दिन भीतर अप्रूव किबा रिजेक्ट करिवे मो काढ बुझी परछो कि केते समय भीतर आपण अप्रूव करंतु कि रिजेक्ट करंतु बट करंतु अब सेटा हमको कहि दियंतु जे हमको केते दिन भीतर आपण ए बिल टाको अप्रूव करिवे कि रिजेक्ट करिवे सेटा संविधान रे कोठी लिखा है नाही सेम गोज विथ द प्रेसिडेंट आल्सो बिल जदि प्रेसिडेंट पाखको गला प्रेसिडेंट ताको अप्रूव करिवे कि रिजेक्ट करिवे कि रिटर्न करिवे तो लिखा है किंतु समय लिखा है नि कोठी इमिति हेई पारे जे प्रेसिडेंट किछि भी ताको रिप्लाई करिवेनी सो जेहेतु गोटे कंट्रोवर्सी चली ता ऊपर किछिटा जजेस मान जजमेंट माने इंटरप्रिटेशन किछिटा करिसंती कि किछिटा टिप्पणी भी दिया जायछि जोथरे कोहा जायछि नाही गोटे टाइमलाइन हवा दरकार जदि टाइमलाइन न हवा फल कोन प्रॉब्लम होछि जदि गोटे इंपोर्टेंट बिल हेतिबो आ गवर्नर जदि ताको अप्रूव न कले किबा रिजेक्ट भी न कले तले प्रॉब्लम एया जे फर्दर ता ऊपर किछि काम करि हबोनी नुआ गोटे बिल तमे केतोळे आनिबो जदि सेही बिलटा अप्रूव हेइनी जदि रिजेक्ट हे जायछि एटलीस्ट तुमको जाना थिबा दरकार कि मते कोन चेंजेस दरकार तो प्रॉब्लम होची गोटे व्यवस्था रे हैम्पर हे जाउची सेही क्षेत्र रे द्रौपदी मुर्मू कोन करिसंती ऑनरेबल प्रेसिडेंट सी कहिसंती जे जेहेतु प्रेसिडेंट हमर संविधान रे कोनोसी प्रकार टाइम लिमिट मेंशन नाही ताहाले कोन जुडिशियरी से टाइम को प्रेस्क्राइब करि परिबो जुडिशियरी पाखरे से पावर अछि कि एडा गवर्नर का हमर प्रेसिडेंट काहू पचारले सुप्रीम कोर्ट पाखू पचारले बिकॉज सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली किछिटा जजमेंट देइछंती कि हां टाइम लिमिट हवा दरकार प्रेस्क्राइब करबा दरकार किंतु प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट को पचारछंती कोन तुमो पाखरे से पावर अछि कि ताको प्रेस्क्राइब करि परिबो जेहेतु एटा प्रेसिडेंट कर पावर किबा गवर्नर कर पावर ओके से क्वेश्चन रिलेटेड बेसिकली एटा रहिछि सो एटा होछि तमरो any decisions of the governor the president under article 200-201 respectively justiciable at the stage prior to even the bill in a question becoming a law is it permissible for the courts to undertake judicial adjudication over the content of a bill in any manner before it becomes the law अर्थ मु जेमति तुमको कहिली जे हमर जुडिशियरी सेतबेले इंटरवेन करिवो जेतबेले लॉ हेई सारिछि बिल रु लॉ कन्वर्ट हेई साला परे ही जुडिशियरी ताको कहबो जे नाही लॉ रे किछि फॉल्ट अछि कि नाही सेतबेले जुडिशियरी कहबो एठी प्रेसिडेंट पचारुचंती कोन तुम पाखरे सेति पावर अछि कि गोटे लॉ हबा पूर्वरु कोन तमे ता ऊपरे रिव्यू करि परिबो बुझि परछो एई सब प्रश्न बहुत सारा प्रश्न अछि केवल तुमको मु दि तीनटा ही तुमको कहूची जोटा इंपोर्टेंट हम पय तो बेसिकली एई जिंस ताको कोन एक्सप्लेन करिया पे कहूचंती आर यू क्लियर ओके so this is related to what this is related to your advisory jurisdictions clear to एटा तुमरो पोटेंशियल जो माने अपकमिंग प्रीलिम्स के मेंस तबो सेही पॉइंट ऑफ व्यू मे बी एठु गोटे क्वेश्चंस आसीबार चांसेस अछि ओके सो राइट डाउन एडवाइजरी जुरिस्डिक्शंस
write down. Under Article 143, under Article 143, President has power to seek advice of Supreme Court. President has power to seek advice of Supreme Court on a question of law, on a question of law or fact of public importance, on question of law or fact of public importance, which has happened, which has happened or likely to happen, which has happened or likely to happen, and the court after conducting such hearing, and the court after conducting such hearing, as it may think fit, as it may fit think, as it hearing, as it may think fit, okay, nijo chintahara jodi taku fit lage, as it may think fit, may report to president, may report to president, जोटा मु कहली तुमको कोन कि रिप्लाई तो देबे किंतु एडवाइस न दे पारंती, यार अर्थ होची सेटा. Full stop. It is not mandatory for the court to render advice. It is not mandatory for the court to render advice. It is not mandatory for the court to render, R-E-N-D-E-R, render advice, render माने दबा, or giving advice, render advice, nor it is obligatory on president, nor it is obligatory on president to abide by the advice, to abide by the advice. Okay, full stop. Every such references shall be heard by a bench comprising of shall be heard by a bench comprising of not less than 5 judges, comprising of not less than 5 judges. ठीक अच्छे, तो मिनिमम केतेटा जज दरकार 5टा. तमाने तुम्हें बुझी पारथिबो नॉर्मली कोन हुए जेतबेले केस हुए इधर जणे किबा 3 जण एई टाइप रो बसंती, बुझी पारछो. 5 जण जज बसी की गोटे जिंस ऊपर तदारक करिए माने सेति की इंपोर्टेंट नथले 5 जण जज के भी बसी पारि. हमरो इंडिया जुडिशियरी रे इतिहास रे गोटे केस मु जोटा तुमको कहे केशवानंद भारती केस मु बारंबार कहि तुमको से गोटे केस रे सबटो हाईएस्ट 13 जण जज बसी की ताकू 7:6 रेशियो रे सेटा पास हेतिला.
ମାନେ 7 ଜଣ ହଁ କହିଲେ 6 ଜଣ ମନା କରିଥିଲେ। 13 ଜଣ ଜଜ୍ ସବୁଠୁ ହାଇଏଷ୍ଟ। ତା ପରେ ଏମିତି କୌଣସି ବି ଜଜମେଣ୍ଟ ନାହିଁ ଯୋଉଟା କି 13 ଜଣ ଜଜ୍ ବସିକି ଗୋଟେ କେସ୍କୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଛନ୍ତି। ସୋ ଆଡଭାଇଜରୀ ଜୁରିସ୍ଡିକ୍ସନ ତମେ ବୁଝିପାରୁଥିବ ସେତେବେଳେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି 5 ଜଣ ମିନିମମ୍ ଜଜମେଣ୍ଟ ଜଜ୍ ଦରକାର ତା ଉପରେ